Welcome everyone in this physics video. In today's video student we are going to learn about dielectrics, dielectric constant and after this polarization. Okay, so first thing that we are going to start over here. What thing is dielectric? Dielectric. So for this student we should to remember this is said to be non-conducting medium. Okay, so non-conducting medium, which are non-conducting medium student? So as we are known over there that these are that commonly known by us insulators. Okay, so all those non-metal which are said to be insulator, so it is non-metals. So what thing is dielectric? That non-conducting medium, so which is insulator, they are said to be dielectric. Such as we are having the examples that it is of dry air is their student, which is going to act as insulating medium. Thereafter we are having this dry wood is there, which is acting as insulating medium. We are having mica is there, which is acting as a dielectric medium. We are having glass is there, which is acting as dielectric medium. Okay, so rubber that we are having, it is dielectric medium. Okay, so thus what all these are, that they are non-conducting. And why they are non-conducting? So because they do not have free charges. Okay, so that moment of charges is not possible in them. So moment of charges not possible in them. Charges is not possible in them. Okay, so therefore we are going to call them as dielectric. Okay, so now let us to learn over here student that as if I will place in this field, here it is the external field. Okay, so in it I am going to place, there is a conductor. Okay, here I have placed a conductor which is in this external field. Okay, so now this external field which is over here, it is E naught. Okay, so what will happen? Okay, how this conductor will behave? So we already known in the behavior of this conductor that negative charge will appear on this phase and positive charge will appear on this phase. Okay, so over there student, there is the charge which will appear on its surface. Okay, and what is the direction of this field? So outside field it is E naught, which is from left to side, but inside we are looking that there is one field which is from right to left. Okay, so this field is inside. Okay, so in case of conductor student, this field which is inside, it is exactly equal to that field which is outside of it. So therefore if I will find over there how much is the net field then inside the conductor, so we will have this one, it is 0. Okay, so what is that net field inside the conductor? It is 0. Okay, what if we will place a dielectric medium student? As I'm having this is that electric field, in it I'm going to place a dielectric or insulating medium. Okay, so which is over here. Earlier what we have considered, it is conductor. Okay, this was conductor. Now I'm going to place over here, it is dielectric. Okay, so when this dielectric is placed in this electric field student, so over here the direction of electric field is E naught. Okay, it is the field which is outside of the dielectric, and over there what will happen? Some of the charge will appear on the surface of this that dielectric due to polarization. There I'm going to say that due to polarization, a word is going to use by me, it is polarization, and which we have to discuss over here. Okay, so that some of the charge it appears on its surface, but as we are known student, and that this dielectric do not have that free electron. Okay, so, as already written by us that they do not have any free electron due to which that movement is not possible. So therefore what will happen? That some charge will appear on its that surface. Okay, so due to of it that there will be a field which is produced inside of this. So this field is inside of that dielectric, but this is not exactly equal to outside field. Okay, so
we are getting over there, student, this net field, then what it will be? So that outside field is E naught, and that field which is produced inside due to polarization, it is not equal to that of external field. Therefore, E naught minus that field which is inside, that will give us net electric field. Okay, so therefore this net electric field, that what will be the direction of this? It will be from that left to right, because E naught is greater. Okay, so therefore right side field will be greater, so net field is going to be in this direction. So now just to look over here, student, this net field I am going to write it with E. Okay, so we are looking over here, student, this net field is E naught minus E इनसाइड, जो आउटसाइड फील्ड और इनसाइड फील्ड को माइनस करने से हमारे पास क्या बना, दैट फील्ड. वट दिस फील्ड इज वट, रिड्यूस्ड फील्ड. ये कैसी फील्ड है हमारे पास, रिड्यूस्ड फील्ड. इट मीन टू से दैट दिस डाइलेक्ट्रिक इट रिड्यूसेस द फील्ड. ये क्या कर देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देता है. दैट्स मेक्स इट्स यूजेस. That's why we are using it in case of this capacitor. Important to note down that why we are using them in capacitor, because the electric field get reduced inside of them, due to which more and more charges can be stored. Okay, so it is the special case which we are taking for this that capacitor. Okay, so over here this field get reduced, so reduced field is said to be E. Okay, now we want to know that by what factor this field get reduced. So over here, student, external field which was outside of this dielectric medium, it was E naught, and the field which gets inside this one, the net field which is inside the dielectric, it is E. Okay, so the ratio of this will give us that factor by which this field get reduced. Okay, so therefore we get over here, it is ratio of external field to that ratio of reduced field. Okay, so therefore this is said to be K, a constant, and this constant is said to be dielectric constant. It is dielectric constant. Okay, so important to note over here, student, that this dielectric constant, it is different for different dielectric. It is not same for all the dielectric, but it is different for different dielectric. So it depends. Therefore we can say that this dielectric constant, it depends on that nature of medium. Okay, so over here, student, we come to know that whenever we are going to place this that dielectric in external field, so that time this field inside of the dielectric get reduced, and by what factor it is going to reduce, so it is given by that dielectric constant. Okay, now over here, student, we are going to learn itself about that these dielectric are further of two different types. Okay, so dielectrics, they are of two dielectric types. So one we are going to call over here, student, that they are polar, and the second one, it is regarding to that of non-polar. Okay, so thus we are having over here that these dielectric are of two type. One, it is said to be polar, and second, it is said to be non-polar. Okay, so now let us to learn over here that what thing is polar and what thing is non-polar. Okay, so this we are going to discuss on the basis of its molecular level. Okay, so on the basis of molecular level, we are going to divide this dielectric into two type. One, it is polar or non-polar. So before going to start to this concept, student, let us to learn one thing which is already we did that in our previous 11th standard. As we are having the two masses here, the two masses. Okay, so they are at a distance from each other, m1 and it is m2. Okay, so will you tell me, if both of them are equal, so where their center of mass will lie? Okay,
So center of mass means the point from where they can be balanced. Okay, so definitely it is over there, student. If both the masses are of same size, so they can be balanced at this position, which is the mid part of the total distance. Okay, so that means this center of mass where it will be at r/2 position. So we have taken that formula of calculation in our 11th standard. Okay, and second thing over here, student, if it is the first case which I said, if second case I am saying that m1 is greater than m2, if this mass is bigger than that of second one, so which side this center of mass will come? So we will say that this center of mass will be towards heavier side, towards that m1. Okay, so this center of mass will lie somewhere at this situation. Okay, so same way that we are going to take over here that center of mass. Okay, so over here what we are going to consider center of mass. Okay, so first thing that I am going to take over here, student, this is non-polar. Now which is non-polar? So I am having over here that of hydrogen molecule, it is non-polar. Thereafter nitrogen molecule is non-polar. This is O2 is non-polar. Okay, that methane is that of non-polar. Okay, now how, why we said that these are non-polar? Okay, so student, we have to look over here that as in hydrogen. Okay, so what is over there in hydrogen? That we are having this hydrogen molecule, it is made up of two hydrogen. Hydrogen molecule is made up of two hydrogen atom. Okay, so it's every atom has one that positive charge and one negative charge. Okay, so over there it is having one positive and one negative charge. Okay, so therefore student, that where the center of this positive charge will lie, the center of positive charge, so that will be exactly where it will lie. If both are of same size, so where it will lie? Exactly at the middle. Okay, and there it is electron, here it is electron, so where the center of these electron will lie, it will also lie exactly on that center. Okay, so we come to know over here that the center of this positive and negative of a molecule, it is going to lie at same point. Okay, so therefore such a molecule or that such type of dielectric are said to be non-polar. Okay, so what is happening over there? That center of this positive charge and negative charge coincides, such dielectric are non-polar. Okay, so thus student, we come to know over here that this is non-polar. So what is happening over there? That positive and negative, their center is going to be at same point. So therefore this is known to be as non-polar. Okay, now over here student, thus polar. So whom we are going to say that polar. So polar is what, student? As few of the example we are having, it is water molecule is polar. Thereafter we are having Cl is polar. Okay, so what thing is polar? So we will find that, student, here chlorine, so it is having more charge. Here it is chlorine, so and second it is hydrogen, so hydrogen is having small charge. Okay, so here it is hydrogen. So you will find over there, student, that where the center of that positive charge will lie, where the center of positive charge will lie for this HCl. So we will find that this center of charge will lie somewhere towards chlorine. तो जो क्लोरीन एटम है उसकी तरफ क्या होगा, जो सेंटर ऑफ चार्ज है वो लाई करेगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, वो लाई करेगा, ठीक है। एंड सेकंड थिंग ओवर देयर, स्टूडेंट, जो हमारे पास इस क्लोरीन एटम के पास क्या है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी क्या है, क्लोरीन की ज्यादा है, ठीक है। सो फॉर दैट पर्पज व्हाट इट विल डू, इट विल अट्रैक्ट दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ
हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ये उसको क्या करेगा, अपने पास अट्रैक्ट कर लेगा. सो दस वेयर विल बी द सेंटर ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज. तो जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है दैट विल नॉट लाई ऑन दैट सेंटर ऑफ पॉजिटिव, बट इट विल बी टूवर्ड्स दैट लेफ्ट. तो इसका जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है वो किस तरफ आ जाएगा, टूवर्ड लेफ्ट हो जाएगा. सो फॉर सिंप्लीफिकेशन आई एम गोइंग टू शो, ये जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है वो यहाँ जैसे लाई कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, और जो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है तो ये हमारे पास यहाँ पर लाई कर रहा है. ठीक है. सो ओवर देयर स्टूडेंट व्हाट इज हैपनिंग, मेरे पास ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. ठीक है. तो इक्वल और अपोजिट चार्ज हैं, दोनों क्या हो गए, एक स्मॉल जो डिस्टेंस से सेपरेटेड है. ठीक है. सो दस वी कैन से ओवर देयर दैट द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दे डू नॉट coincide at a point. Okay, so what we are saying over here, that centers of positive and negative charge do not coincides. Such dielectric are known as this polar dielectric. Okay, so what are these? They are polar. Now next thing that which we have to look over here, student, that this polar, you will find over there that this positive and negative, they are separated to each other by a distance. So it means that it is having a dipole moment. तो इसकी डाइपोल मोमेंट किस तरफ होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी. ठीक है. सो देयरफॉर वी कैन से दैट इट हैज परमानेंट डाइपोल मोमेंट. परमानेंट डाइपोल मोमेंट. क्यों इसकी परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है स्टूडेंट, बिकॉज एज डाइपोल मोमेंट को हम क्या करते हैं, स्मॉल पी से लिखते हैं ना, Q इंटू 2L. ठीक है. सो ओवर देयर इज अ सेपरेशन between the positive and negative center, so therefore we are having it is dipole moment. But if we are going to look for this non-polar की अगर हम बात करें student, so what you suppose that is there any separation? There is no separation. So then we are saying that it has temporary, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ temporary, जो इसमें क्या होती है, डाइपोल मोमेंट होगी. अब टेम्पररी कैसे है उसके ऊपर भी बात होनी है अभी, डाइपोल मोमेंट. ठीक है. So this we are having. So now over here student, let us to learn more about that कि इसकी टेम्पररी डाइपोल मोमेंट कैसे बन जाती है. ठीक है. So for this I am going to suppose here student, let us to have over here, ये मेरे पास है एक पोलर जो मैंने सब्सटेंस है वो कंसीडर कर लिया, एंड दिस आई हैव कंसीडर्ड ओवर हेयर नॉन पोलर. ठीक है. सो व्हाट आई डिड ओवर हेयर, इट इज नॉन पोलर. ओके. एंड दिस इज पोलर. ठीक है. तो पोलर में हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, जो डाइपोल मोमेंट होती है, बट ओवर हियर जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, ये क्या होते हैं, रैंडमली अरेंज्ड होते हैं. रैंडमली मीन्स दे डू नॉट हैव एनी डेफिनेट डायरेक्शन. ठीक है. तो जैसे हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर कुछ एक जो ये पोलर मॉलिक्यूल है ये इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे हो गया, और कुछ मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे, दोनों के बीच में सेपरेशन है, और कुछ मॉलिक्यूल हमारे पास स्टूडेंट इस तरह से हो जाते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, या फिर कुछ ऐसे अपने आप को अरेंज करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव. ठीक है. सो वी विल फाइंड ओवर देयर, इसकी डाइपोल मोमेंट इस तरह से है, इसकी डाइपोल मोमेंट ऐसे है, इसकी डाइपोल मोमेंट हमारे पास इस तरह से शो की जाएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन होती है ना, और इसकी डाइपोल मोमेंट ऐसे है. ठीक है. तो इसलिए हमारे पास इसकी जो नेट डाइपोल मोमेंट है स्टूडेंट, दैट इट इज गोइंग टू बी जीरो. ठीक है. तो हमारे पास इसकी नेट डाइपोल मोमेंट क्या होती है, जीरो. सो वी आर सीइंग दिस केस व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड. जो आउटसाइड फील्ड है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास यहाँ पे जीरो. ठीक है. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और उस वक्त हमारे पास जो पोलर हैं वो रेंडमली अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो डाइपोल मोमेंट है नेट वो क्या रहती है, जीरो. इवन दो हर मॉलिक्यूल की अपनी डाइपोल मोमेंट होती है, बट स्टिल अपनी रैंडम अरेंजमेंट के रीजन्स पर देयर नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो. ठीक है. एंड सिमिलरली ओवर देयर स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है,
सो एट दैट मोमेंट हमारे पास ये जो नॉन पोलर है, सो दे डू नॉट हैव देयर डाइपोल मोमेंट, इनका तो वैसे ही डाइपोल मोमेंट तो होता ही नहीं था, ठीक है। तो इनका तो पॉजिटिव और नेगेटिव ही हमारे पास क्या करता है, कंसाइड करता था, ठीक है। सो देयरफॉर दे डू नॉट हैव एनी डाइपोल मोमेंट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट स्टूडेंट, अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दी, फॉर एग्जांपल दिस इज दैट एक्सटर्नल फील्ड, ये मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दी। नाउ इनसाइड ऑफ दिस आई एम गोइंग टू प्लेस दिस डाइपोल, इस डाइपोल को मैंने, सॉरी इस डाइलेक्ट्रिक को मैंने उसके अंदर प्लेस कर दिया। सो व्हाट विल हैपन स्टूडेंट, देखना ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस तरह से है, इसके रास्ते में इन इट्स पाथ देयर अ मॉलिक्यूल विल कम, ठीक है। सो मॉलिक्यूल विल कम, सो व्हाट विल हैपन, दिस फोर्स विल बी एक्सर्टेड ऑन दिस पॉजिटिव चार्ज, ये रिपेल होगा एंड दिस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड लेफ्ट, सो व्हाट विल हैपन, टॉर्क विल एक्ट ऑन इट, ठीक है। व्हाट विल हैपन ओवर देयर, टॉर्क विल एक्ट, जो हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड है वो क्या करेगी, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर रिपल्सन और नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी, तो जिससे टॉर्क एक्ट करेगा। ओके, सो दस वी गेट ओवर हियर that here let me to suppose this external field which is I'm having, it is E1, उसका magnitude E1 लिया। so I'm having over here student this that these dipole are going to arrange them in the direction of electric field, it is not over there exactly because here I'm like taking that it is having small strength of the this external field। okay, so you will find there student this dipole moment is in this way of this single molecule, its molecular dipole moment is this moment is in this way, this moment is in this way। so what is happening over there, all these dipole moment they are going to be in same direction। okay, so therefore there will be a net dipole moment, now this dipole moment I have given it as the name P1। okay, and over here student if I will consider this one that case, if I will increase the electric field, external electric field, now I am going to take over here E2, so here E2 is greater than E1। okay, so over here student what will happen, that they will be more aligned toward this electric field, जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये अपने आप को क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। सो इन दिस वे दैट दे आर गोइंग टू अरेंज देयर सेल्फ, इट इज नॉट एग्जैक्टली ऑल विल डू व्हाट वी आर टेकिंग ओवर हियर दैट दे आर डूइंग दिस। ओके, तो जो जितनी भी डायपोल मोमेंट है स्टूडेंट वो सारी की सारी क्या हो रही हैं, एक ही तरफ हो रही हैं, ठीक है। सो देयरफॉर दिस डायपोल मोमेंट राइट नाउ इट इज P2। नाउ विच डायपोल मोमेंट इज ग्रेटर, सो यू विल फाइंड दैट P2 डायपोल मोमेंट इज ग्रेटर देन P1, क्योंकि P2 में क्या हो रही सारी एग्जैक्टली एक तरफ है, P1 फिर भी क्या थी थोड़ी बहुत हमारे पास जो डायपोल मोमेंट थी वो एग्जैक्टली सेम में नहीं थी, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आप इंक्रीज कर रहे हो तो उससे डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। बट रिमेंबर दिस वन, देर इज नो एडिशनल डायपोल मोमेंट एडेड, मतलब कि जो एक्सटर्नल फील्ड है उसने कुछ भी ऐड नहीं किया, उसने ऑलरेडी पोलर मॉलिक्यूल के पास डायपोल मोमेंट थी, उसने बस उनको एक डेफिनेट डायरेक्शन में ही अरेंज किया, ठीक है। तो उसने कोई भी एडिशनल मोमेंट उसमें ऐड नहीं किया। नाउ ओवर हियर इफ आई विल टॉक अबाउट दिस दैट ऑफ नॉन पोलर, तो नॉन पोलर में स्टूडेंट व्हाट विल हैपन ओवर हियर, जो हमारे पास जैसे व्हेन इट इज प्लेस इन दिस एक्सटर्नल फील्ड, तो जो हमारे पास जैसे E1 मैग्नीट्यूड की फील्ड के अंदर हमने क्या किया, इसको प्लेस किया। ओके, सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर, जस्ट टू चेक दिस वन, ये मेरे पास जो फील्ड थी ये टुवर्ड राइट, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा टुवर्ड राइट डायरेक्शन में, इसको रिपेल करेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, इसको जो नेगेटिव चार्ज था इसको टुवर्ड लेफ्ट अट्रैक्ट करेगा। सो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी द सेपरेशन इन द चार्जेस, तो ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस उन चार्जेस के बीच में सेपरेशन कॉज करेगा, ठीक है। सो दस आई गेट ओवर हियर दिस इज द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, here is that separation between the charges। so thus along with this separation this external electric field arrange them in direction of the field, ठीक है। so you will find that all they have their dipole moment toward right, तो इसलिए सारे के सारे जो जितने भी मॉलिक्यूल है वो उनकी डायपोल मोमेंट किस तरफ हो जाती है, राइट। तो इसलिए नेट डायपोल मोमेंट
सबको एडअप करने से बन जाती है, तो इसलिए डाइपोल मोमेंट लेट इट बी P1, ठीक है। बट ओवर हेयर स्टूडेंट, अगर मैं क्या करता हूँ, लेट मी टू सपोज दैट हेयर इफ आई विल इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, okay, so what will happen, so you will find over there this separation, ये जो हमारे पास सेपरेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, ये क्या हो जाएगी, और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सो ओवर हेयर दिस सेपरेशन दैट इट विल इंक्रीज मच मोर, ठीक है। जैसे ही फील्ड इंक्रीज हुई तो जो सेपरेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव की, दैट विल इंक्रीज मच मोर, ओके। सो दिस इज आई एम गोइंग टू शो ओवर हेयर, बट ओवर देयर यू विल फाइंड दैट स्टूडेंट, जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट होती है स्मॉल p, सो इट इज q इंटू 2l। जब ये सेपरेशन इंक्रीज होती है तो डाइपोल मोमेंट भी बढ़ती है। सो इट मीन्स दिस डाइपोल मोमेंट एट मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट क्या बनेगी, p2। सो विच डाइपोल मोमेंट इज ग्रेटर, so we are known with this one that P2 is greater than P1, तो जो डाइपोल मोमेंट है वो P2 P1 से ग्रेटर बनी। सो वी कम टू नो ओवर हेयर दिस डाइपोल मोमेंट दैट विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती है डाइपोल मोमेंट भी इंक्रीज हो जाती है, ओके। So thus we come to know over here student that what thing is polar and what thing is non-polar and how they are going to behave in the external field, okay। So over here one thing that we are looking student, that these those that molecule, polar molecule or either it is non-polar, in external field, all they are arranging them in the direction of electric field, okay। So therefore student, we are going to call such a dielectric, it is said to be polarized, what it is over there, it is polarized dielectric, ठीक है। तो पोलराइज क्या हो गया हमारे पास स्टूडेंट, जो जितने भी हमारे पास यहाँ पर मॉलिक्यूल हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर देते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी आर सेइंग दैट ऑल मॉलिक्यूल्स अरेंज देयर सेल्फ इन डायरेक्शन ऑफ external field, okay। So this is said to be then polarized dielectric, okay। Now over here let us to learn about this then polarization, okay। So it is polarization. So for this student, once again, as I have this one, it is a plate which is kept by us, it is having the positive charge, here it is having the positive charge, it is having negative charge over here, okay। So over here student, what is happening, if I will place a dielectric inside this plate, तो ये जो हमारे पास दो जो चार्ज प्लेट है इसके बीच में अगर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस किया जाता है, सो व्हाट विल हैपन, ऑल दीज मॉलिक्यूल्स दे विल अरेंज देयर सेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसलिए ये सारे के सारे क्या करेंगे, अपने आप को उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कुछ इस तरह से अरेंज कर लेंगे। सो हियर आई एम गोइंग टू शो फ्यू ऑफ देम, they are going to arrange themselves in the direction of electric field, okay। So now over here student, we will look that जो हमारे पास if I will check over here student, there with this dotted line I'm going to show you the volume or those molecule which are coming inside of this dotted line, so you will find that they are going to cancel their effect, as we are having this positive charge when it will that combine with this negative of the second molecule, so it will neutralize, this positive will meet with the another, so it will neutralize. Similarly over there this will meet with this one, so neutralize, this positive with another negative, so it will neutralize. So it means student, over there what is happening, all those molecules which are inside, those charges which are inside of this dotted line, they are going to neutralize each other, okay। So what is happening, only charge on the surface is going to remain, okay। Thus I am having over there this situation that here is, this is positive plate, this is positive plate, here it is negative plate, and over here in this dielectric
we are getting that negative charge is going to appear on this closer face and positive charge is at this one. Okay, so thus we are going to say this is what? This is polarization. What is this? This is polarization. And therefore we can also define this that it is process of inducing equal and opposite charges on the two faces of the dielectric on the application of external field. So thus we get over here student what happened कि हमारे पास इस डायलेक्ट्रिक के दो अपोजिट फेसिस के ऊपर यहाँ पर क्या हो जाती है सिग्मा जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जो है यहाँ पर डेवलप हो जाती है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हो जाती है तो इक्वल एंड अपोजिट है ठीक है इट इज़ नॉट सेम एज विच इज़ ऑन द सरफेस इट इज़ डिफरेंट ठीक है तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर व्हाट इज हैपनिंग इक्वल एंड अपोजिट जो चार्जेस है उस एक्सटर्नल फील्ड में सरफेस के ऊपर डेवलप हो जाते हैं विच वी हैव सीन हियर सो पोलराइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस P. Polarization is represented by P, capital P that we are going to take over here. Okay, and how do we define it? So it is defined as that of dipole moment developed per unit that volume. Dipole moment per unit volume. Okay, so as student we are known with one thing that there you have checked this one. As the electric field is going to increase, so the dipole moment is going to increase as well. And over here, this polarization, so it will also increase. Okay, so therefore, over here I am going to write that this dipole moment is directly proportional to that electric field. And over here if I will remove this constant of proportionality, then I have to use this constant over here which is chi. Okay, this is what chi, and here it is electric field. So this chi, it is constant of proportionality and it is said to be electric susceptibility. Okay, so what is this? It is that of electric susceptibility. Now over here, how do we define this electric susceptibility? So electric susceptibility is what, student? That it is polarization developed in the unit electric field. Okay, so it is a constant term. What is this? It is a constant term, and that we are looking over here that how much is this polarization developed in that unit field. So that is said to be this electric susceptibility. So this is all from this video. Thanks. Keep on watching.